Hey guys, Rome Guruji here. I'm back with another video for Iqoo 3. So like I said, I will update all Iqoo 3 users on what's happening. So a new update is here and there are no changes. No, I'm kidding. Okay, so if you see the change log, it just tells you that there's a security update, and which is true. It's been updated to, well, the last security patch because the latest one has not been released yet, which is fine. It's fine, to be very honest, right? And a lot of people are complaining that the monthly updates are off given that the Origin OS is coming. Well, I have a lot of news about Origin OS, and if you're an Iqoo 3 user, you really need to press that subscribe button. I am going to get you some really cool leaks that I have found out, some really cool things, and obviously on November 19th, I will get you how it looks and how it's going to work. So subscribe, man, subscribe. But now that we have that out of the way, what's new in the update, right? So I am not going to show you what's new in the update using the phone because there's nothing visually new. Nothing visually has changed in this update. The update looks exactly identical to the last update. So what has happened? Well, basically they've said that security update is there, but very honestly speaking, right, there are a few changes that they've made, and let's discuss that. They're very minor and this is not going to be a very long video, so stay tuned, right? So firstly, what has happened is your security update has come. So yeah, they have stayed true on their promise of offering monthly updates, which is commendable given that most of their engineers right now are working on Origin OS. Now you will ask me why? Well, go to that video in I button and you'll know why. So yeah, it is commendable that they've offered this update, but this is a very bare bones update in theory. So a lot of changes have not come in UI for a long time, which is fine. But the UI itself had a lot of bugs when it came to performance. So you must remember this is a Snapdragon 865 powered phone, yet there are stutters, there are lags, and app launching times are not that great. So what has Iqoo done? Iqoo this time has improved, and I genuinely say, when I say improved, the app launching time, the animation speed, and in general smoothness of the UI. Now I know the changes aren't so massive that you will feel like you're just using a new phone, but in theory the amount of time it requires to launch an app, the amount of time it requires to scroll down has considerably gone down, and you will feel you're using a flagship phone. Trust me, they've improved on this and this really feels nice. What else have they done? The last update caused a battery optimization issue where your battery was draining in standby. So it's been partially fixed, right? What do I mean? Well, what I basically mean is, wait, आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प पे जाके ये वीडियो हिंदी में देख सकते हैं. So I was saying this has been partially fixed, and what that basically means is the battery drain has gone down considerably but has not fully gone down the way it should have. So yeah, they are trying to do it and they've partially fixed. Now what is upcoming? A lot of people ask me, okay, what is coming new for Iqoo? Do you know about it? Firstly, I'm not a representative of Iqoo. They don't tell me stuff. Most of the time they don't even reply to my tweets, which is fine. But from what I see on digital chat station, I see on the group and people searching Chinese forums, see, if you ask me frankly, Iqoo 3 would be one of the first phones in India to receive Origin OS. And the very basic reason for it is the brand offers great hardware, but they are really struggling with the UI and people liking the UI. Firstly, it was just a few people on the Telegram group, but now a lot of people have started asking questions on my videos that, hey, is the UI okay? Is it like really bad? Oh, it's not really bad, but it's not something you would expect from a flagship phone. So yeah, they're working on it and they're going to bring you all those changes. Like they said last time that yeah, they're going to get Android 11 this year itself, and now we've got to know that the Origin OS is Vivo's Android 11 interpretation. So in my opinion, and now this is a personal opinion based on my analysis of the situation and my idea, that yes, Vivo will allow the Iqoo 3 users to be one of the first people to get the Origin OS. And that was all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe, and let's move on to the Hindi version. So guys, ये एक सिंपल एक अपडेट का इन्फॉर्मेशन है. मैंने बोला था मैं Iqoo 3 के सारे अपडेट्स आपको दूंगा, तो मैं आ गया अपडेट्स देने. तो जो Iqoo 3 है, इसमें एक सिंपली चीज आप समझो
कि ये जो अपडेट है इसमें विजुअली कोई चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ आपके लुक्स में चेंज नहीं है, तो मैं वो आपको नहीं दिखाने वाला, मैं आपको इनफैक्ट फोन ही नहीं दिखाने वाला इस वीडियो पे। तो उसका एक सिंपल रीजन है फोन ना दिखाने का कि कोई विजुअल चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस आए हैं वो आपके आए हैं सॉफ्टवेयर में। क्या है, सिक्योरिटी अपडेट हुआ है, चेंज लॉग में तो उतना ही लिखा है, वैसा नहीं है। तो जो Iqoo 3 है इसमें कुछ विजुअल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पर पिछले अपडेट में कुछ बग्स आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी लोग को, और मोर ओवर एक फ्लैगशिप फोन होते हुए इसमें आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं आता है। तो Iqoo ने क्या डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, हम एक जल्दी अपडेट पुश कर देते, जो मेरे हिसाब से कमेंडेबल है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था हम एक महीने में, हर महीने आपको एक अपडेट देंगे, वो दे रहे हैं। तो कमेंडेबल है क्योंकि ओरिजिन ओएस आने वाला है और तब भी वो हमें एक अपडेट देने की कोशिश करें, तो ये कमेंडेबल बात है और मुझे काफी अच्छा लगा ये देख के, ठीक है। और जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बग्स फिक्स किए। पहले तो जो फोन है वो ज्यादा स्मूथ फील होता है, अभी मैं आपको कैमरा पे दिखा पाऊं इतना कोई चेंज नहीं आया है, बट कंसिडरेबल अमाउंट में एक चेंज आया है जिससे आपको लगेगा कि हाँ मेरा फोन स्मूथ चल रहा है, मेरा फोन थोड़ा बेटर चल रहा है। तो काफी अच्छी चीज आई है देखने में, बहुत अच्छा लगा है मुझे देख के, बहुत बढ़िया चीज है। और एक चीज जो हुई है, आपको पता है लास्ट अपडेट में स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन आया था कि आपकी बैटरी बहुत ड्रेन हो रही थी स्टैंड बाय में। वेल वो चेंज हो गया है, वो इतना भी नहीं, पूरा फिक्स नहीं हुआ, मैं जैसे बोला पार्शियली फिक्स हुआ है, ठीक है। तो कम हो गया जो बैटरी ड्रेन आपको स्टैंड बाय में आता था, ठीक है, बढ़ा नहीं है, कम हो गया, तो अच्छी बात है, वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है काफी लोग पूछते हैं कि हाँ यार Iqoo में और नया क्या है, मैं अभी ले लूं क्या, मैं क्या होने वाला है। तो पहले तो मैं Iqoo का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, वो तो मेरे ट्वीट को भी रिप्लाई नहीं करते, बट एक जो चीज है आपको समझनी है कि vivo इंडिया में जो अपना ओरिजिन ओएस लाएगा, उनमें से पहले रिसीव करने वाले Iqoo 3 यूजर्स भी होंगे। और आप पूछेंगे क्यों, तो आपको एक चीज देखनी चाहिए, ब्रांड का जो हार्डवेयर प्रपोजिशन है प्राइस के हिसाब से वो बहुत बढ़िया है, बट ब्रांड इंडिया में एक पकड़ नहीं बना पाया। क्यों, क्योंकि उनका यूआई उतना अच्छा नहीं था। तो vivo ये जो कमी है वो सबसे पहले पूरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आपने मेरा ओरिजिन ओएस वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में, वहां पे मैंने बताया है कि ये जो ओरिजिन ओएस है इसकी टेस्टिंग Iqoo पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इनकी टेस्टिंग Iqoo पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और Iqoo वालों ने बोला था कि वो इसी साल एंड्रॉइड 11 लाएंगे। तो vivo का एंड्रॉइड 11 वर्जन ओरिजिन ओएस ही है। तो हाँ, ओरिजिन ओएस के पहले रिसीव करने वाले Iqoo 3 यूजर्स हो सकते हैं। इसी न्यूज के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। Iqoo 3 की सारी न्यूज चाहिए तो यार सब्सक्राइब कर ही दो यार, क्या बोलूं मैं अब, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।